Y20 कंसल्टेशन 2023 कार्यक्रम में आज भुवनेश्वर अनुष्ठित होता मीडिया सेशन शीर्षक थिला युव शक्ति परिवर्तन बाहक एवं उन्नत विश्वर निर्माण। एथिरे समाजर संपादक निरंजन रथ, धरित्री एवं ओडिशा पोस्टर संपादक तथागत शतपथी, राज्यर सूचना कमिशनर सुशांत कुमार महांती, सत्यजित राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट निर्देशक हिमांशु शेखर खटुआ, संवादर संपादक सौम्यरंजन पट्टनायक एवं न्यू इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला जोग देइथिले। अवसर में ओडिशा आसीथिबा जातीय गणमाध्यम सांबादिकों संबर्धित करा जायतिला। कार्यक्रम स्वागत भाषण दे किट एवं किस प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत कहिथिले उन्नत भविष्य पई युवपीढ़ी को भल शिक्षा एवं प्रशिक्षण देवाक पड़िबो। धरित्रीर संपादक तथागत शतपथी कहिथिले बयस एक संख्या मात्र, जी नुआ विकल्प चिंताधारा ग्रहण करने प्रस्तुत से ही युवक, तेबे युवपीढ़ी नुआ परिकल्पना सहित नुआ समाधान बाहर करिपारन्ते बोली कहिथिले राज्य सूचना कमिशनर सुशांत कुमार महांती। SRFTI निर्देशक हिमांशु शेखर खटुआ कहिथिले युवपीढ़ी स्वप्न देखती किंतु सही स्वप्न पूरण पाई दिग्दर्शनर आवश्यकता रही। प्रभु चावलांक मत भारत में विविधता रही, जदि जड़े युवक भारतीय होई काम करिबो तेबे से महान होई परिबो। The power of youth driving change and building a better world. हम लोग को सबको पता है, India is a youth country. More than 65% population belong to youth. Building better world is possible, provided youth should be empowered in a proper manner, and they should be skilled in a proper manner, they should be educated in a proper manner, and youth themselves should think about themselves. I have now become old. I can change myself. There are fantastic colors available. There are fantastic painters. Does any color on earth, does any parlor, does anything, any instrument can change the power, the internal press, the power, the instinct, the temptation of man? Certainly not. It is one's culture and tradition. India is the best in the world. Youth is something that is willing to accept alternative thoughts, that is willing to consider, need not necessarily live it, need not necessarily own it, need not necessarily accept it, but is willing to consider an alternative thought, is willing to consider an opinion which seemingly on the surface looks as if it is not, it doesn't cotton, it doesn't stick together to what we have been made to believe. In this rapidly changing world, youth have a unique perspective on the future. They are able to imagine and create new solutions that older generation may not have considered. They bring energy, creativity, and willingness to take risk that is essential for driving change. Here, what is happening? Lot of people are inspired by a single person, that is Dr. Achyuta Samanta, because he thinks positive. That inspires so many people to think in a positive direction. Every year, 60,000 persons are passing out from this institute. If they get inspired by a single person and they think positive in a constructive way, they can think of a better world. So people normally in young age, they think, they dream, and their dream is definitely is a very abstract kind of thing. But we should nurture their dream, how to fulfill it, how to make the entire potential energy into kinetic energy so that they can drive the world in a forward direction. If world citizen is created, whosoever he may be, wherever he may be, if the youth in America, the youth in Europe, and youth in Asia and Africa think in one language and one vision, perhaps the world will be a better place to live in. Without that, perhaps we can be talking about it, nothing will happen. जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल फर्स्ट लेवल में लिखा है, फर्स्ट आर्टिकल के अंदर, इंडिया दैट इज भारत. व्हाई दैट इज भारत? भारत दैट इज इंडिया, ये कह सकते हैं आप.
जिस दिन इस देश के अंदर यूथ को पता लग जाएगा कि मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन नहीं हूं, इंडियन इज वेस्टर्न कंसेप्ट, तो यूथ हैज टू बिकम भारतीय। एंड भारत के अंदर क्योंकि इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है, उसको भी अगर आप प्रयोग करना शुरू कर दें तो आप में से कई लोग बन सकते हैं, जकरबर्ग बन सकते हैं, बिल गेट्स भी बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें।